Next slide is about the movements of the Earth. The first one is orbit. The path of the planet round the sun is called orbit. If you look at this picture, this is Earth and this is the path. The path of the planet round the sun is called orbit. ये जो रास्ता है इस रास्ते को हम orbit कहते हैं. And same if you look at the moon is orbiting the Earth. Next is axis. What is axis? This is an imaginary line running from the North Pole to the South Pole through the center of the Earth. हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा था that the upper side of the Earth is called the North Pole and the lower side is called the South Pole. North और South Pole, North Pole से लेकर South Pole तक एक इमेजिनरी एक तस्वुराती लकीर लगाई गई है. बेसिकली क्या है कि ज़मीन को पढ़ने के लिए, ज़मीन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और आसानी के लिए कुछ ख़याली लकीरें लगाई गई हैं. और जो लकीर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लगाई गई है, दैट लाइन इज़ कॉल्ड एक्सिस. इस लाइन को एक्सिस का नाम दिया गया है. And there is one more interesting fact about our planet Earth, and that is the Earth is tilted at 23.5 degrees on its axis. हमारी जो ज़मीन है ये अगर स्पेस में देखा जाए तो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा झुकी हुई है. कितना? At 23.5 degrees on its axis. ये अपने ही एक्सेस पे 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है. अगर आप दोबारा से इसी वाली पिक्चर को देखो तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाए कि जो अर्थ है ये आपको थोड़ी सी तिरछी नज़र आएगी. दैट इज़ टिल्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज इक्वेटर. व्हाट इज इक्वेटर? एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. अब एक और लकीर जो ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये बिल्कुल ज़मीन के मिडल में लगाई गई है एंड दैट लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर. ये जो रेड लाइन है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. There is one interesting fact about the equator, and that is that the places close to the equator are hot throughout the year, while the places farther away from the equator have different seasons. Why that so? If you look at this picture, look at the sun. The sun is direct on the equator. So most of the year, the places on the equator or near equator are most of the time facing the sun. That is why these places are hot throughout the year, and places that are farther away from the equator, they have different seasons. Next slide is about hemisphere. What is hemisphere? Hemi means half. The equator divides the earth into northern and the southern hemispheres. हमारी जो ज़मीन है, स्पेशली जो इक्वेटर की अगर हम बात करें, इक्वेटर ने हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है. जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर करके ऊपर का हिस्सा जो है दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. The equator divides the earth into northern and southern hemispheres. Both the hemispheres are opposite of each other. यानी जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं. कैसे ऑपोजिट होते हैं? इफ़ देयर इज़ अ summer season in the northern hemisphere, then there will be the winter season in the southern hemisphere. और ऐसा क्यों होता है? That is because of the tilt of the earth. Now we are going to read about the directions. Cardinal directions. Cardinal directions क्या होती हैं? The four main points of a compass, north, south, east and west, are called the cardinal directions. यानी कि north, south, east and west, they are called the cardinal directions. These are the four main directions on the compass. Intermediate directions. Intermediate directions क्या होती हैं? The directions in between the cardinal directions on a compass, northeast, northwest, southeast and southwest, are called the intermediate directions. Now look at this picture. ये हमारी main directions हैं. North, south, east and west, they are the cardinal directions. The directions in between जो रेड कलर से आपको नज़र आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस,
These are called the intermediate directions.